Hello students, in previous lecture we have studied about the TIR, total internal reflection, and the more examples of the refraction. So let's revise in few minutes, then afterward we will go to the next topic. Okay, so let's start with the refractive index. Refractive index is mu. So what is refractive index? Refractive index is mu is equal to speed of light c upon in vacuum or air. Okay, upon speed of light in any medium. So mu is equal to simply this is C by V. Okay, it is called the refractive index or absolute refractive index. Okay, it is also called absolute refractive index. Absolute refractive index. अब एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं? बिकॉज व्हेन refractive index one medium is air and another medium is any medium. So whenever one medium is vacuum or air, so refractive index is called the absolute refractive index. याद रखेंगे जब भी हम वैक्यूम के बारे में बात करेंगे, एक मीडियम आपका वैक्यूम होगा या एयर होगा, उसमें हम आपको जो refractive index होगा that is called the absolute refractive index, that is C by V. अब suppose you have two mediums, तो उसे बोलते हैं relative refractive index. क्या बोलते हैं? relative refractive index. अभी यहाँ पे एक मीडियम एयर है वैक्यूम का, दूसरा मीडियम आपका कोई भी मीडियम रहा, ग्लास, वाटर, whatever. Okay, but suppose you have two mediums, one is glass, another is water. Okay, in this respect we will use relative refractive index. यहाँ पे absolute refractive था, वहाँ पे यूज होगा relative refractive index. ठीक है, चलिए बात करते हैं relative refractive index की. Relative refractive index. Suppose you have two medium, one is mu1, okay, and in this medium the velocity of light is v1, and you have medium 2, that is mu2, and the velocity and this medium is mu2. Okay, this is a rare medium and this is denser medium. Whenever light comes from the rarer medium to denser medium, it comes closer to the normal. Okay, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट हियर, if you talk about the mu1, so mu1 will be what? C by v1. Okay, and for this mu2, that is C by v2. Okay, if you take the ratio, if you let this is second equation, this is first. So equation 2 by equation 1. So you will get what? mu2 by v1, that is C by v2 over C by v1. So C will be cancelled out. So v1 will go to the numerator, and it will be like this v1 by v2. So this mu2 by v1, it can be written as 1 mu2. It can be written as 1 mu2. The refractive index of 2 with respect to the 1. It is there is a
medium 1. Okay, so this is the inverse ratio of the velocity. 1 mu is equal to v1 by v2 means velocity के आपको रेसिप्रोकल में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. ठीक है. On the basis of this, we have studied the different application of the refraction. तो हमने TIR की बात की थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब आप लोग कहेंगे भाई ये तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है. ठीक है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, बट हम लोग पढ़ के इसमें रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट टॉपिक क्या है रिफ्रैक्शन. तो होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा. When light comes from the denser medium to the rare medium, condition is that light comes from the denser light comes from denser medium to rare medium. Okay, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो कहता है दैट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिए आप तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे ये डेविएट हो जाएगी. ठीक है, दिस इज एंगल आई एंड दिस लाइट मस्ट ट्रेवल through straight line but it deviates. Okay, so this is angle of refraction, that is R. Now what happens, suppose the angle of incidence is bent more. Okay, अब आपका angle of incidence और आपने bend कर दिया. ठीक, suppose यहाँ थ्री डायग्राम बनाते हैं. Suppose like this. What will happen in this case? Now, अब क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और अवे हो जाएगी नॉर्मल से. ठीक है, नॉर्मल से और अवे हो जाएगी. इट विल बी परपेंडिकुलर. इट विल बी परपेंडिकुलर. ओके, अब ये परपेंडिकुलर हो गई. ठीक, दैट इज आर रिफ्रैक्शन. सॉरी, ये दिस विल बी एंगल 90 डिग्री. दिस एंगल इज कॉल्ड, दिस आई इज कॉल्ड द थीटा सी. समवेयर इट इज रिटन एज थीटा सी क्रिटिकल एंगल और आई सी. ओके, I say critical angle. This angle is called the critical angle. The angle at which the refracted angle becomes 90 degree. That angle is called the, that incident angle is called the critical angle. अब suppose करो, अब आपने इस IC को और इंक्रीज कर दिया. ठीक है, आप क्या किया, आपने लाइक दिस. ऐसा कोई इंसिडेंट एंगल है जो IC से ग्रेटर है. ठीक है, तो क्या होगा, एट दिस टाइम द रिफ्रैक्टेड रे will be like this. Okay, this. जो आपकी इंसिडेंट रहे, जो रिफ्लेक्टेड रहे, वो उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है.
ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इन दिस केस अब 90 डिग्री से अधिक होगा तो फिर से उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाएगी। तो ये देखा हो कि वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो गई, इसलिए बोलते हैं इसे रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपका TIR का एग्जांपल है। केस क्या है? इन दिस केस I must be greater than IC। तो जो आपका इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए, तब आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वापस से उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। होना चाहिए इसे रियल मीडियम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बट क्या होगा? वापस से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्लियर है सब चीजें? फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। चलो अब बात करते हैं इसमें कुछ फॉर्मूले हैं ऑन द बेसिस ऑफ IC। ओके, सो साइन थीटा और साइन IC फॉर्मूला है साइन IC इज इक्वल टू 1/μ। And it is also this is cosec C। क्रिटिकल एंगल को C भी बोलते हैं, थीटा C भी बोलते हैं, सॉरी नॉट 1/cosec, 1/cosec ओके। sin theta is equal to 1/cosec, sin theta is equal to sin IC is equal to 1/μ, so it will also, or it simply cosec IC is equal to, okay, refractive index is equal to the cosec IC, critical angle of cosec, ठीक है। ये है। अब सपोज करो कि जो म्यू है वो वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंडेंट है, उसको भी नोट करेंगे। नोट दैट 1/μ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये नोट करेंगे, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये आपकी क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट and this is the frequency. It means कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड, ओके, नोटेड डाउन। कुछ वैल्यूज हैं, आप डायरेक्ट लिखना हो तो लिख लेना। सपोज करो वाटर से ग्लास से वाटर में रे आ रही है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। इट इज जस्ट टू रिमेंबर द थिंग्स। कभी डायरेक्ट पूछ लेता है तो वाटर टू एयर नोट कर लेंगे, क्रिटिकल एंगल वाटर टू एयर IC must be greater than 49 degree, glass to water IC is greater than or greater than 63 degree। थर्ड वैल्यूज है ग्लास टू एयर I is equal to glass to air IC must be the 40 degree, ओके। डायरेक्टली अगर पूछे तो आप लोग इसको टिक
टिक कर दीजिएगा ऑप्शन में। सो इससे कुछ दिया है कि एग्जांपल्स हैं, उसको लिख दीजिए कि आपके एग्जाम में सपोज करो पूछ दिया कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द TIR, पूछता नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप जाते रहिए। एग्जांपल्स ऑफ TIR, फर्स्ट एग्जांपल है आपका दैट इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड और शाइनिंग ऑफ डायमंड। ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है। ओके, ये ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है कम्युनिकेशन पर्पज से, ठीक है ना। जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो उसके लिए जो वायर्स यूज होते हैं वो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स। मिराज आपने देखा होगा, मिराज कर रहा है इन समर सीजन। आपको देखा होगा कि डिजर्ट्स में कुछ चीज़ें आपको सामने लगेगा कुछ दूर पे पानी है, ठीक है ना। तो ऐसा होता नहीं है, इट इज़ ड्यू टू दी मिरर। जो ये एक इल्यूमिनेशन होता है, इल्यूजन होता है कि आप कुछ दूर पर ऐसा लगेगा कि जब सरफेस बहुत ज़्यादा वार्म होती है, हीटअप हो जाती है, तो वहाँ की जो एयर होती है वो क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। तो जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो अपोजिट ऊपर दिखने लगती है, ठीक है। तो इस जो फिनोमेना को बोलते हैं वो मिराज बोलते हैं। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ द टोटल ल्यूमिनर रिफ्रैक्शन, ठीक है गाइस। आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंस से स्टार्ट करेंगे। आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।